नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जलधर शशिवर्णौ गोपवेशौ किशोरौ सहचरगुणवृन्दै क्रीडमानौ व्रजेशौ नटवरजितवेशौ नीलपीताम्बराढ्यौ जगतजननहेतु रामकृष्णौ नतोऽस्मि। राधिकारमणं वन्दे कृष्णं मधुरसागरं मन्दस्मितमुकाम्बोजं चन्द्रकान्तिसमप्रभं राधिकायाः प्रियं देवं राधिका सहचारिणं राधिका नित्यमानन्दं राधिकारमणं भजे। I thought here the deities are Radhika Ramana. So we have in the Radha Raman temple, they have these glorification slokas. Not sure who wrote, but we are reading from Canto 10, chapter 65 and text 32. वसित्वा वाससि नीले माला मामुच्च काञ्चनीं रेजे स्वलङ्कृतो लिप्तो माहेन्द्र इव वारणः वासित्वा वाससि नीले माला मामुच्च काञ्चनीं रेजे स्वलङ्कृतो लिप्तो माहेन्द्र इव वारणः वसित्वा वाससि नीले माला मामुच्च काञ्चनीं रेजे स्वलङ्कृतो लिप्तो महेन्द्र इव वारणः नीले च काञ्चनीं स्वलङ्कृतो लिप्तो महेन्द्र इव वारणः वसित्वा वाससि नीले माला मामुच्च काञ्चनीं रेजे स्वलङ्कृतो लिप्तो महेन्द्र इव वारणः। You read Hindi. You read one at a time. Read one at a time. वसित्वा वाससि नीले मालामां च काञ्चनीं रेजे स्वलङ्कृतो लिप्तो वाससि नीले लिप्तो काञ्चनीं लिप्तो Word to word. Vasitva Ankar Vasasi Hile Mala
Kancham, Hanchanim, Neva, Reje, Alankritaha, Abhush, Liptaha, Lekya, Mahendra, Eva, Tatla, Varanaha. भगवान ने नीले वस्त्र पहने और गले में सुनहरा हार डाल लिया। सुगंधियों से लेपित और सुंदर ढंग से अलंकृत होकर वे इंद्र के हाथी जैसे सुशोभित हो रहे थे। तात्पर्य: चंदन लेप तथा अन्य शुद्ध सुगंधित वस्तुओं का लेप करके बलराम इंद्र के महान हाथी ऐरावत जैसे बने थे। So Lord Balarama, now dressed in blue garments, and he had his necklace, golden necklace, and had so many beautiful fragrances he adorned, and he is looking like Airavata, Indra's royal elephant. That is what is said here. In this chapter, if we read carefully, we will have some questions. First question: why is Lord Balarama, who actually came to console the gopis, is actually having pastimes, dancing with the gopis and having amorous pastimes with the gopis? Second question is, why did Lord Balaram, he took wine? Third question is, why Lord Balaram is forcing Krishna's wife Yamuna to assist him? And who is the personality came after all this and offered dandavats, obeisances to Balaram, and who is that personality? Yeah. I am sure you have heard from the beginning, you know some of the answers to these questions, but for the benefit of everybody. First, the gopis that Lord Balarama danced or had amorous pastimes, they are not Krishna's gopis. They are not the ones who participated in Ras Leela with Lord Krishna. Then why these gopis, those who are with Balaram right now, why they couldn't participate in the Ras Leela with Lord Krishna? Their acharyas are saying that they were too small at the time. So those gopis are different, these gopis are different. So Lord Balaram consoled gopis of Krishna's gopis, and also he enjoyed pastimes with his own gopis. And because he wanted to have water sports in Yamuna, and he called Yamuna. Yamuna did not come. Finally, we know the story, you must have heard last few days,
that he dragged Yamuna with his plow. और फिर वो जल क्रीड़ा जब करना चाह रहे थे तो यमुना को उन्होंने बुलाया और यमुना ने मना किया, तब उन्होंने उनको ढाल से खींचा. Why is that? And Acharyas are saying that the personality who came, she is actually not Krishna's wife Kalindi, but she is Varuna's wife, because she is called as Sagar Angana. She is Varuna's wife Yamuna. यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि ये कृष्ण की भार्या कालिंदी नहीं थी जो आई थी, परंतु वरुण देव की भार्या थी, जो कि सागर अंजना कहा गया है श्लोक में, वो वरुण देव की पत्नी है. Finally, one more lady comes. After this pastime is over, you must have led. Her name is Kanti. अब एक और स्त्री यहाँ पे आती है इस लीला में, जिनका नाम है कांति. Who is that lady? वह कौन है? She is Lakshmi herself, who is wife of Lord Sankarshan. स्वयं लक्ष्मी है जो संकर्षण की पत्नी है. She came to glorify the Lord. वह भगवान का गुणगान कर रही है. And the last question is, why did Balram drink wine? आखिरी प्रश्न है कि बलराम जी ने मदिरा पान क्यों किया? If we also see, Balram was also playing dice. That's when he and Rukmi had a fight. और आप देख सकते हैं कि उन्होंने शतरंज भी खेला था, उनकी रुक्मी से लड़ाई हुई. That means he was involved in gambling. इसका अर्थ है वो विद्युत में भी सम्मिलित थे. So he was drinking wine वह मदिरा पान भी कर रहे थे. and also dancing with gopis. Amorous pastimes is having. और गोपियों के साथ नृत्य भी कर रहे थे, माधुरी लीला. And also he was actually, yeah, also performing gambling. दूध पीड़ा भी कर रहे थे. Yeah, at least, yeah, 3 out of the 4 regulative principles he seems to be breaking. चार में से 3 में तो बलराम ने तोड़ दिए. Yeah, did he get initiated? दीक्षा हुई थी क्या? Yeah. One time somebody asked Śrīla Prabhupāda, why is Krishna dancing with others' wives? इधर श्री प्रभुपाद से इसने पूछा, कृष्ण यहाँ पर क्यों दूसरों की पत्नियों के साथ नृत्य कर रहे हैं? Prabhupada replied that Krishna is the only Purusha, everyone else is Prakriti. प्रभुपाद ने उत्तर दिया, कृष्ण एकमात्र पुरुष है, अन्य सभी प्रकृति. Everybody is meant to be for the enjoyment of Krishna. सब भगवान के आनंद के लिए है. Yeah, everyone else is Krishna's property. सब भगवान की ही संपत्ति है. And he asked that person, why are you keeping one of Krishna's wives? उन्होंने उससे पूछा कि आपने कृष्ण की एक पत्नी को अपने पास क्यों रखा हुआ है? Yeah. So the point is, there is no dharma vyatikram. We cannot have the rules that are meant for the human society. We cannot take those rules and apply to the Supreme Lord. यहाँ तक कि ये है कि यहाँ पे कोई धर्म व्यतिक्रम नहीं है. हम वो नियम जो कि जनमानस के लिए लागू होते हैं, उनको लेके भगवान पे लागू नहीं कर सकते. But anyway, Vishnu Chakravarti Thakur gives one beautiful reason why Krishna is actually married to all the gopis. Reveals the secret. परंतु वह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर कारण देते हैं कि कृष्ण इन सभी गोपियों के साथ क्यों विवाहित थे. वह एक रहस्य बताते हैं. Anyone knows the secret? कोई जानते हैं इस रहस्य को? He says that in that Brahma Vimohan Leela, कहते हैं ब्रह्म विमोहन लीला में Krishna actually became all the calves and all the cowherd boys in Vrindavan. कृष्ण ने अपना विस्तार किया था सारे ही ग्वालों में और सारे ही बछड़ों में. That is one full year. पूरे एक वर्ष के लिए Every cowherd boy is actually Krishna. हर ग्वाला कृष्ण ने था. Purnamasi arranged all the marriages in Vrindavan on that 1 year. पौर्णमासी ने ये व्यवस्था की कि वृंदावन में जितने भी विवाह थे उस एक वर्ष में हुए. So all those gopis are actually Krishna's wives. They are not married to others. जितनी भी गोपियां हैं वो वास्तव में श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, किसी और से उनका विवाह नहीं हुआ. Yeah. And those who were small at that time, they were
now actually dancing or enjoying with Lord Balrama's association, they are Balrama's gopis. और जो उस समय पे छोटी थी वह अब श्री बलराम जी का संग प्राप्त कर रही है और उसमें आनंद ले रही है। So there is no record of these gopis marrying anybody. और इन गोपियों का कोई रिकॉर्ड नहीं आता कि किसी से और से विवाह किया। Yeah, so sometimes we get confused and try to apply whatever rules that we follow. We actually try to apply this to the Supreme Lord. He is above all the rules and regulations because he actually is dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. Whatever the Lord says is dharma, that is for us, but we cannot go and apply the rules in this world on Supreme Lord. कभी-कभी हम भ्रमित होकर यह नियम जो हम पर लागू है तो भगवान पे लागू करने लगते हैं, परंतु भगवान जो इंगित करते हैं वही धर्म है और हमारे लिए है, हम उसको भगवान पे नहीं लागू करते। There is a code of conduct for Kshatriyas. क्षत्रियों के लिए कुछ नियम है समाचार के। Lord Krishna and Lord Balram are playing the role of Kshatriyas. कृष्ण और बलराम यहाँ पे क्षत्रियों की भूमिका निभा रहे हैं। So, in Kshatriyas, if anybody challenges them in the war or in the gambling, they must fight. अगर क्षत्रियों को कोई जुए में या फिर युद्ध में चुनौती देता है तो उनका उसके प्रति प्रतिकार करना अनिवार्य है। That's how Yudhishthir Maharaj actually participated in the gambling match. इसीलिए युधिष्ठिर महाराज भी जुआ थे। He was following the code of conduct for Kshatriyas, though he was not interested. वे क्षत्रिय नियम का पालन कर रहे थे, हालांकि वह खुद इसमें नहीं थे। Similarly, when Rukmi invited Lord Balram actually accepted the proposal and he was involved in gambling. ऐसे ही रुक्मी ने जो बलराम जी को चुनौती दी तो वह जुआ खेला क्योंकि क्षत्रिय धर्म का पालन कर। Correct. You can also claim that I am also Kshatriya. Can I also involve? आप कह सकते हैं मैं भी क्षत्रिय हूँ, मैं भी खेल सकता हूँ। Such kind of Kshatriyas are not there now. ऐसे क्षत्रिय अब नहीं हैं। Because Kshatriya also should fight क्षत्रिय को लड़ना भी होता है। with lion and they were fighting without a weapon. शेर से बिलाई से हथियार के Yeah. अब आजकल like nowadays we actually fight even using weapons with mosquitoes. आजकल हम मच्छर से भी हथियार के लड़ते हैं। Yeah. So such things we cannot say, okay, it's applicable for me also, I can also do that. हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये सब मेरे लिए लागू होते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। And the last one, why did the Lord took wine? आखिरी प्रश्न कि भगवान ने मदिरा क्यों ली? So Krishna says, Yadyad acharati shreshtaha tatta deve taro janaha sayat pramanam kurute lokastad anuvartate. So Krishna says that whatever great man does, common people will follow. इसलिए कहते हैं कि जो भी श्रेष्ठ काम लोग करते हैं सामान्य जन उसका पालन करते हैं। Yeah. So Lord Balram now is drinking. So we are common people, can we also follow that? बलराम जी हम मदिरा पालन कर रहे हैं तो क्या हम साधारण लोग भी कर सकते हैं इसका पालन? Yeah. No. Many times some of the acharyas are saying that is not wine. नहीं ऐसा नहीं है। Some आचार्य कई बड़े कहते हैं कि वो मदिरा है ही नहीं। Yeah. Sometimes in ISKCON we'll drink coffee and say that it's caffeine-free coffee, caffeine-free tea, all that. कभी-कभी हम कॉफी पीते हैं उसमें कैफीन फ्री होती है कॉफी, कैफीन फ्री चाय होती है। And Ekadasi day also we actually make so many items, say that it's grain-free food. एकादशी में क्या-क्या बनाते हैं जिसमें अन्न नहीं होता। One time we went to one place with one of the Maharajas in ISKCON to one devotee's home in New Jersey. So that Mataji was welcomed us, Mataji and Prabhuji, and then both of them were showing their house. As soon as we went there, that Prabhuji and Mataji was speaking and telling everything in their house.
Then she showed one separate kitchen and she said, Maharaj, this is Ekadasi kitchen. और उन्होंने अलग भिन्न किचन दिखाई, उन्होंने कहा यह रसोई सिर्फ एकादशी We की kept है। it separate and we'll do like all kinds of cooking on Ekadasi here, grain free. हमने इसको बिल्कुल अलग रखा है और एकादशी में सारे हम कुकिंग यहीं पे करते हैं बिना आलू के। Maharaj told her that you have Ekadasi kitchen but you don't have Ekadasi consciousness. महाराज ने कहा कि आप बस एकादशी की रसोई तो है परंतु एकादशी की चेतना नहीं। Yeah, क्योंकि Ekadasi means we have to not just plan for separate kitchen and eating so many things which are grain free. Ekadasi we have to chant more, hear more and associate more. महाराज कहते हैं कि एकादशी का अर्थ ये नहीं है कि आपको अलग से रसोई बनानी है और अलग अलग पकवान बनाने की योजना बनानी है, आपको भगवान के नाम का जप ज़्यादा करना है, श्रवण ज़्यादा करना है, ध्यान ज़्यादा करना है। Yeah, many times people say they want coffee and tea. We'll say, okay, you take this whatever Gokul tea, this coffee, that coffee. What is happening in that is that though we have given up coffee and tea, the taste is still there. We want to experience it in different way. कभी-कभी जब चाय पीना चाहते हैं तो कोई गोकुल चाय है, अन्य चाय, हर्बल चाय देते हैं कि ये वाली चाय भी लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने चाय कॉफी को छोड़ दी, परंतु उसका जो स्वाद है उसको हम नहीं छोड़ पाए। Yeah. Sometimes people say that, oh, eating this mushroom, what I have given up non-veg, but कभी-कभी mushroom खाने से वो याद आता है. So they are also remembering that some kind of enjoyment. हम लोग जो मशरूम खाते हैं कहते हैं नॉनवेज तो खाना हमने मांसाहार खाना छोड़ दिया, परंतु मशरूम खा के कभी-कभी मांसाहार याद आता है। Yes. One should not be. If we are taking anything, but that is not helping us to progress in Krishna consciousness, again we are remembering the old vasanas, such things should be given up. अगर हम कुछ भी ऐसा ले रहे हैं जिससे हमें भक्ति में प्रगति करने में मदद नहीं हो रही है और अपने पुराने संस्कार का वापस स्मरण हो रहा है तो उसको त्याग देना चाहिए। So, but then when Krishna says, whatever great man does, common people follow, why like Balram is doing like this and drinking wine? अगर जब कृष्ण कहते हैं कि जो श्रेष्ठ लोग करते हैं, जो साधारण लोग पालन करते हैं, तो बलराम जी यहाँ मदिरापान क्यों कर रहे हैं? And this, some say it's not wine, some say it's wine. कई लोग कहते हैं मदिरा है, कई लोग कहते हैं मदिरा नहीं है। Yeah, this also for Kshatriyas, in some occasions, it is allowed to drink. और ये क्षत्रियों के लिए कुछ-कुछ समय पर ये अलाउड है, कर सकते हैं। Yeah. But we are not that kind of Kshatriyas, so these things we should not imitate. तो हम उस प्रकार के क्षत्रिय नहीं हैं, तो हमें इसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। Something about Balram and Krishna. One famous question, whenever anybody says that I am a sadhu or representing any religion or any movement, in America, people ask them one question. कभी भी अगर कोई अमेरिका में कहता है कि मैं साधु हूँ, मैं इस धर्म का भजन कीर्तन कर रहा हूँ, तो उनसे एक प्रश्न पूछा जाता है। Nobody ever answered that question because किसी ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। but this was asked spontaneously to Prabhupada, and Prabhupada also replied spontaneously. प्रभुपाद से ये वैधानिक को पूछा गया और उन्होंने उसका वैधानिक उत्तर दिया। See what was the question? Hear carefully. क्या प्रश्न था? ध्यान से सुनो। Can your God create a stone which he himself cannot lift? क्या आपके भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो वे खुद नहीं उठा सकते? If you say yes, अगर आप हाँ बोले, what kind of a God is he? He can't even lift a stone. कैसे भगवान है ये जो एक पत्थर भी नहीं उठा सकते? If you say no, ना बोले, what kind of God is he? Can't he create a stone? ये कैसे भगवान है ये पत्थर नहीं बना सकते? Is there an answer to this question? इस प्रश्न का क्या कोई उत्तर है? This was asked to Prabhupada. भगवान से पूछा गया। He said yes. उन्होंने कहा हाँ, Krishna creates, Balram lives. उन्होंने कृष्ण बनाते हैं और बलराम से उठाते हैं Yeah, they're one and the same. और वे एक ही हैं। Yeah. And one other time in Vrindavan, Prabhupada asked devotees, और एक अन्य समय में वृंदावन में प्रभुपाद ने भक्तों से पूछा, who is more strong, Krishna or Balram? कौन ज्यादा शक्तिशाली है, कृष्ण या बलराम? What would be the answer? क्या उत्तर देंगे? Huh?
Krishna. Many people said Balram. बहुत लोग बलराम कहते हैं, Balram means strength and this thing. बलराम ये बल है, And Prabhupada said no. प्रभुपाद का नहीं, Then people said Krishna. Only two people are there. It's not Balram, it should be Krishna. लेकिन बात सबने कहा कि कृष्ण, क्योंकि दो ही लोग हैं। Prabhupada said, look at the deities and tell why. प्रभुपाद ने कहा कि आप जाके विग्रहों का दर्शन कीजिए और बताइए क्यों। Why? In Vrindavan, yeah, Balram is actually taking support of Krishna. Here also, yeah. बलराम जो है वो कृष्ण का सहारा लिए खड़े हैं, Yeah, so Krishna is stronger than Balram. इसलिए कृष्ण बलराम जी से ज़्यादा शक्तिमान है। Yeah. So like this, many things that Śrīla Prabhupāda told about Krishna and Balram, we don't see that anyone else actually answered to such riddles and puzzles. आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें जो श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण और बलराम के बारे में बताई, बहुत लोग ऐसी पहेलियों का उत्तर नहीं दे पाए। Yeah, last few days we were in, wherever we are in the temples of Krishna and Balram. पिछले दिनों से हम जहाँ भी थे कृष्ण बलराम के मंदिरों में, First we were in Vrindavan, पहले वृंदावन में, then we went to Gurukula, फिर गुरुकुल, Bhaktivedanta Gurukula. There also Krishna Balram is there. भक्तिदान गुरुकुल, वहाँ भी कृष्ण, Finally we came here. We are also surprised to see Krishna and Balram here. यहाँ पे आए हैं, अचंभित थे, हाँ भी कृष्ण बलराम हैं, Yeah, and this class is also about Balram. और ये अक्षर भी बलराम जी के बारे में है। Yeah. So, and sometimes the Lord, they do wonderful things. और कभी-कभी भगवान बहुत अद्भुत कार्य करते हैं। Actually, we came to Delhi for one purpose. हम दिल्ली के एक उद्देश्य से आए हैं। We wanted to meet somebody in the CBSE office to get some affiliation. Our affiliation got stuck. We want to get it moving. CBSE से एप्लीकेशन निरंतर की वजह से मीटिंग करनी थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए। But we had no plan. We don't know anyone. हमारे पास कोई भी प्लान नहीं थी, हम किसी को नहीं जानते। We went to Gurukula. They invited us that before you go, you come here, give a class. गुरुकुल में उन्होंने हमें बुलाया, जाने से पहले एक बड़ी कक्षा दी। We spoke to children sometime in Sanskrit and little bit English. We gave a class and then we wanted to take prasadam and move away. हम बच्चों को वहाँ पे कक्षा दी, थोड़ी संस्कृत में, थोड़ी इंग्लिश में, और फिर सोचा कि प्रसाद लेकर चलते हैं। Suddenly one Mataji came. She is the principal of the school. माता जी वहाँ पे आई, जो स्कूल की प्रिंसिपल थी, Then Radhakant Prabhu introduced that principal to us. राधाकांत प्रभु ने उनका हमसे परिचय कराया। He told that she is retired teacher. She is our principal. In the past, she is also in the CBSE affiliation committee. उन्होंने बताया कि ये रिटायर्ड टीचर हैं, आप प्रिंसिपल हैं, और ये पहले CBSE एप्लीकेशन वाली थी। We thought Krishna is revealing something. We asked that Mataji, do you know? She said, I got retired, but I have some numbers in my phone. तो हम लोग को लगा कि कृष्ण कुछ यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, तो हमने उनसे पूछा कि आप कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं रिटायर हो चुकी हूँ, पर मुझे मेरे पास कुछ नंबर है। And then 2-3 numbers she gave. हमने 2-3 नंबर कॉन्टैक्ट Her name is Sridevi Mataji. Sridevi Mataji. श्रीदेवी माता। Yeah, she's also devotee and Gopal Krishna Maharaj disciple and chanting 16 rounds and from Andhra she's. जो भक्त हैं, मध्य प्रदेश से हैं, गोपाल कृष्ण महाराज की शिष्य हैं, सेवा में लगे करते हैं। Yeah. So I just called the number. मैंने फोन किया उस नंबर पे। So that person told that there is one Chaturvedi ji here. He is the director. Somehow or other, you go and meet him. He'll help you. तो उन्होंने बताया कि एक चतुर्वेदी जी है, वहाँ पे डायरेक्टर हैं, आप किसी तरीके से जाके मिलिए। So then somehow it's in 3rd floor and they were not allowing. They wanted a letter. I did not have any letterhead paper. I called devotees there. They gave and Vishal Prabhu got it printed. Then gave the letter and finally they sent me to 3rd floor. तो मैं वहाँ पे गया, वो कुछ सुन नहीं रहे थे, उन्होंने कहा लेटर चाहिए, मैंने लेटर बनवाया, फिर सबमिट कराया, वो दिया, और उन्होंने कहा थर्ड फ्लोर पे जाइए। I actually carried prasadam also on Krishna Balram photo, but I forgot in the car and just went like that without any prasadam and photo also. मैं कुछ मिसाल में कृष्ण भगवान का चित्र भी लाया था, मैंने तो गाड़ी में भूल गया। Then I was thinking that if I come down, they may not allow me. So I was praying to Krishna and Balram, you stay there only, but help me. Yeah. So they told, no, he's very... They were saying, for such a small queries, you should not come to him. He is very busy. He is not well. He is also wearing mask, and he just came to meet some other people, and so many people are there with him. He will not meet you.
तो वहाँ पे वो कहने लगे कि वो बहुत बीमार हैं और वो किसी और से मिलने आए थे, उनके पास समय नहीं है, तो वो किस और काम में व्यस्त हैं और फिर नहीं मिल सकते। I said, okay, I'm fine, I'll wait. And I just sat and chanting and praying to Krishna Balram, please help me somehow or other. तो वो बैठ के मैंने कहा कोई मैं इंतजार करता हूँ, और मैं वहाँ पे बैठ के जब करने लगा, कृष्ण बलराम से प्रार्थना करने लगा, इसी तरीके से सहायता करता। After 2 hours, they said, okay, I'll take you only for 2 minutes, you come with me. You wait here, I'll go and ask him. 2 घंटे बाद उन्होंने कहा कि अब तुम 2 मिनट के लिए मैं लेके चलता हूँ, मैं एक बार पूछ के आता हूँ मिलेंगे। I also walked in, then I saw that person, he said, what is the problem? I explained to him. Immediately, in front of him, there's one more lady, they were talking in a meeting, you should help him. तो मैंने बताया कि ये समस्या है, ये था, तो उसके तुरंत बाद वहाँ पे स्त्री थी, उन्होंने कहा कि ये इनकी मदद कीजिए। And that lady said, I will take 2-3 days, but I'll help you. तो स्त्री ने कहा कि 2-3 दिन लूँगी मैं, परंतु आपकी मदद। By the time I came to temple here, like we just came to the temple and we were coming for darshan, it was raining and we came and I got a call from Hyderabad, our team said it's already done. उसके बाद जब हम मंदिर आ रहे थे, मैं पहुँचे थे। I said, such a wonderful miracle Krishna and Balram did. So we'll continue this story. Actually, the entire story is over, and towards the end, after Lakshmi ji came, Balram is very happy. She also gave gifts. If any other wife sees that husband is actually dancing with somebody playing the sport in the river, no wife will come and give gifts. तो कृष्ण भगवान ने बहुत सहायता करी, हम आगे ईश्वर का बुलाएंगे इस प्रकार की। तो वहाँ पर देखते हैं कि इसके बाद लक्ष्मी जी आती हैं और उनको उपहार देती हैं, कथा पूरी होती है। तो अगर हम साधारण रूप से देखें कि अगर एक पति अन्य स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहा है, तो क्या उसकी पत्नी आगे उसे उपहार देगी? So Lakshmi, wife of Sankarshan, seems to be more broad-minded than Lakshmi, wife of Jagannath. लक्ष्मी जी जो संकर्षण से जो पत्नी है, वह ज़्यादा खुले दिमागी है जो लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी की पत्नी है। When Jagannath went for Gundicha Mandir and coming back, Lakshmi had so much problem. जगन्नाथ जी जब गुंडीचा मंदिर में वापस आए, लक्ष्मी जी बहुत परेशान थी। In fact, she went all the way to Gundicha to fight also वो गुंडीचा मंदिर तक गई घंटे, on Hera Panchami day. मेरा पंचमी। When Jagannath came back also, Lakshmi had so much fight, and finally after accepting some laddus and she forgave Jagannath. जब जगन्नाथ जी वापस भी आए, तब भी उन्होंने लड़ाई करी, परंतु अंततः कुछ लड्डू लेके उन्होंने उनको आने दिया। And here Lakshmi comes when he's dancing with other people and gopis, and she actually gave gifts to Lord Balram. He happily wore those, happily adorned over those gifts. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बलराम जी यहाँ पे अन्य स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहे थे, लक्ष्मी जी आती हैं, उन्हें उपहार देती हैं, बलराम जी उन्हें खुशी से स्वीकार करते हैं। This secret is also revealed in Chaitanya Charitamrita. यह रहस्य चैतन्य चरितामृत में There is one verse from Gautamiya Tantra. गौतमी तंत्र में एक श्लोक है। It says that Radhika Paradevata Sarva Lakshmi Mayi Kanta. All the Lakshmis are actually the expansions of Srimati Radharani only. जितनी भी लक्ष्मियाँ हैं, वह केवल श्रीमती राधा रानी की ही विस्तार है। All wives of Krishna, all the gopis of Krishna, and all the Lakshmis in all the Vaikuntha planets are actually expansions of Srimati Radharani. कृष्ण की जितनी भी पत्नियाँ हैं, जितनी भी गोपियाँ हैं, और सारी वैकुंठ लोकों में जितनी भी लक्ष्मियाँ हैं, ये सारी केवल श्रीमती राधा रानी की ही विस्तार है। How she behaves one way like this or one way like that, that nobody knows. वह एक जगह पे ऐसे व्यवहार करते हैं, दूसरी जगह पे अलग तरीके से, ये कैसे होता है ये कोई नहीं जानता। Krishna also does not know. कृष्ण भी नहीं जानते। Yeah. So he accepted, and now he wore, and he is looking like Airavata, the elephant of Indra. बलराम जी ने जो उपहार स्वीकार किए, उन्हें पहना, और अब वह ऐरावत की तरह लग रहे हैं, जो कि दुर्गे हाथी। And Krishna looks, just now we were reading another verse about a prayer about Balram and Krishna. Jaladhara Shashivarnau. Here Jaladhara is the cloud, and Krishna is like that bluish black cloud,
and Balram is like the Shashi, like the full moon, white. तो हम जो पीछे शुरू में श्लोक पढ़ रहे थे उसमें बताया गया है कि कृष्ण जो है वो एक काले बादल की तरह है और बलराम जी चंद्रमा की तरह हैं। Neela Pitambaradyo. Balram is wearing the blue color and Krishna is wearing the yellow color, Pitambara. बलराम जी नीलांबर धारण करते हैं, कृष्ण पीतांबर। Vasitva Vasasi Neele. In this verse is saying that Balram, like full moon, he is yellowish golden complexion, he is wearing that blue color. बलराम जी जैसे एक पूर्ण चंद्रमा की तरह है और वे नीले वस्त्र धारण किए हैं। Yeah. After Yamuna came and asking for forgiveness, after Lakshmi came and gives, still he is enjoying with all the gopis and having water sports in Yamuna. यमुना जी ने उनसे आके माफी मांगी, लक्ष्मी जी ने उन्हें उपहार दिए इस जल पीने के बाद। Generally people ask, what is the proof, what is the proof, what is the proof? और लोग बहुत पूछते हैं कि इसका क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण है। Before closing the chapter, Shukdev Goswami is giving the pramana. इस अध्याय का अंत करने से पहले शुद्धदेव गोस्वामी इसका प्रमाण देते हैं। Adyapi drishyate rajan Yamuna Krishna Vartmana Balasyananta Viryasya Viryam Suchayati Vahi. Even today, O king, one can see how the Yamuna flows through the many channels created when it was dragged by the unlimitedly powerful Lord Balarama. Thus, she demonstrates his prowess. हे राजन, आज भी यह देखा जा सकता है कि किस तरह यमुना अनेक धाराओं में होकर बहती है, जो असीम बलशाली बलराम द्वारा खींची जाने पर बन गई थी। इस प्रकार यमुना उनके पराक्रम को प्रदर्शित करती है। Only in that one place we can see in Vrindavan where Balram dragged Yamuna with his flow. Yamuna is divided into many different channels. केवल उसी जगह पे मुझे वृंदावन में जहाँ पे बलराम जी ने उनको अपने हाथ से खींचा था, हम देखते हैं कि यमुना अलग-अलग हो रखी है। That is the proof. यह प्रमाण है। Evam sarvani shayata Eke varamato vraje Ramasya kshipta chittasya Mathuriyai vrajayoshitam. Thus for Lord Balarama, all the nights passed like a single night as he enjoyed in Raja, his mind enchanted by the exquisite charm and beauty of Raja's young ladies. इस तरह बलराम जी ने सारी रातें ब्रज में रमण करते करते एक रात की तरह बीत गई। उनका मन ब्रज की तरह स्त्रियों की अद्वितीय माधुर्य से मोहित था। In the purport, this is a summary of the purport of the Acharyas. Here Gopinath Prabhu writes, Lord Balarama was enchanted by the charming pastimes of the beautiful young ladies of Raja. Thus each night was completely new experience and all the nights passed as if they were a single night. इस तात्पर्य में जिसमें सारे आचार्यों की टीकाओं को सार में बताया जा रहा है, कहा गया है कि भगवान बलराम ब्रज की तरफ एवं सुंदर स्त्रियों की दोनों के नाम से लोग हो गए। इस तरह हर रात उनके लिए नया अनुभव था और सारी रातें इस तरह बीत गई मानो एक ही रात हो। Gopis also had only the gopis of Krishna. We know that on the Sharad Purnima Ras Leela day, they were with Krishna for one night. तो हम देखते हैं कि जो गोपियाँ थी वो शरद पूर्णिमा की रात को कृष्ण के साथ एक रात के लिए थी। There it was told that one night is that the night of Brahma. हमें बताया गया कि वह एक रात्रि ब्रह्मा के आते हुए That is one kalpa. एक कल होता है। Here they were there few nights, but it is told that so many nights they spent, few days, but as if it was just like one night. यहाँ पे बताया गया कि उन्होंने कई रात साथ में बिताई, परंतु वो सारी रातें एक रात की तरह बीती। Yeah. So time expands and time contracts by the divine arrangement of the Lord. तो जो समय है वो विस्तृत होता है और
Because Bhagavad Gita says time is the energy of the Supreme Personality of Godhead, and also Bhagavatam says. Yeah, in fact, Krishna's wives in Dwaraka are cursing that why it is already like no sunrise. When the cuckoos, when they sing in the morning, they were saying that stupid cuckoos, why they are doing like this thing. They still want the night to expand. But here we see that for the gopis, Krishna made that one night he made, expanded it to like a Brahma's night. Yeah. I'll stop here. If anybody has any questions and comments, criticism, you are welcome. Yes, Madhav. It is not that Lord Krishna was emphasizing on Rasa Leela. It is the Acharyas are elaborately commented on Rasa Leela. But we cannot understand because we do not have the consciousness to understand about Rasa Leela. Somebody asked Prabhupada to explain about Rasa Leela. Prabhupada said, I am not qualified. Swamiji, you are definitely qualified. You know everything. You please explain to us. Once again, Prabhupada was forced. Prabhupada said, you may be qualified, but I am not qualified. Not only Rasa Leela, all the Leelas of Krishna are equally important. Not only all the Leelas of Lord Krishna, but all the Leelas of all avatars mentioned in Srimad Bhagavatam are equally important. But there is a way to read and understand, which is what revealed by Śrīla Prabhupāda. Śrīla Prabhupada said that we should start from the first canto and gradually come to the 10th canto. There is a shloka in the Padma Purana which says that Krishna and Srimad Bhagavatam are non-different. Padau yadiyau prathama dvitiyau trutiya turyau khatitau yaduru nabhistadha panchamayeva shashtau bhujantaram doryugalam tathanyau kantastu rajan navamo yadiyau
मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लं एकादशो यश्च ललाटपट्टं शिरोऽपि यद्वादश एव भातिः तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम. Says that Krishna is Bhagavat Swarupam. There is none different from Krishna and Bhagavatam. The first two and Bhagavatam are the two lotus feet of Krishna. Third, fourth cantos are his thighs. Fifth canto is his navel and sixth canto is his heart. Seventh and eighth cantos are his two arms. Ninth canto is his throat. 10th canto is his beautiful lotus face. Yeah, and 11th canto is the forehead and 12th canto is his head. So when we want to take darshan of the Lord, first we have to start from the feet and gradually go to see his face. So that's why Śrīla Prabhupāda said that when we start from first canto and second canto and gradually we come to 10th canto, after completing 9th canto we become actually liberated, and in 10th canto we will be able to understand the confidential pastimes of the Supreme Lord. Hare Krishna. Any other questions, comments from anyone? Yes, Prabhu. Yes, Prabhuji. Please give mic. हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे माता जी ने क्वेश्चन पूछा रासलीला का, तो ऐसा कहा जाता है वृंदावन में प्रति रात्रि कृष्ण जी आते हैं, गोपियों संग और राजा संग रासलीला करते हैं, क्या ये सत्य है? Yes, because it is told in the Even today. Yes, Krishna, it is told that Vrindavanam parityadya na padamekam gacchati. Shastra says that Krishna will not even put a step outside Vrindavan. He is always there and performing, yes, still also. But we cannot see. We only see when we go to Vrindavan in traffic jam and so many animals moving here and there. And then when it was raining yesterday, we see only that some drainage water is coming out. But Bhagavatam describes, there is a nice chapter, rainy season in Vrindavan. But for us to see and experience all that, we have to follow the process that is told. So more important than getting to Raslila right now is that we read Bhagavatam from the beginning and gradually come to the 9th canto. Then we will actually read and understand in the association of devotees what happens. Yes, Prabhu, give it. So I had a small doubt. You were saying that the Yamuna Devi was not actually Yamuna, but it was the wife of Varun Devi. So, but we see that Yamuna got distributed into various devotees, but that is actually Yamuna Devi. Yes. So how we can reconcile both the things?
They say that Acharyas are saying that his Yamuna is incarnation of that Yamuna, Kalindi. This Yamuna, which came, like when Balram called the one who came, she is Sagarangana Yamuna, incarnation of actual Yamuna. That's how they say. Yeah. प्रभु जी का प्रश्न था कि आपने बताया जैसे कि ये जो यमुना यहाँ पे आई है कृष्ण की भारे यमुना नहीं है भगवान की भारे यमुना थी परंतु जिन यमुना धाराओं में बह रही वो तो वास्तव में यमुना नहीं है उसको कैसे समझें In the purport of verse number 27, it is told, according to Sri Jiva Goswami, the goddess who appeared before Lord Balrama is an expansion of Srimati Kalindi, one of Lord Krishna's queens in Dwaraka. She is expansion of Kalindi. Srila Jiva Goswami calls her as a shadow of Kalindi, and Srila Vishnu Chakravarti Thakur confirms that she is an expansion of Kalindi, not Kalindi herself. Srila Jiva Goswami also gives evidence from Sri Harivamsa in the statement, Pratyuvacharanva Vadhu. The goddess Yamuna is the wife of the ocean. The Harivamsa therefore also refers to her as Sagarangana. श्री जीव गोस्वामी उन्हें कालिंदी की छाया बतलाते हैं और श्री गोपीनाथ चक्रवर्ती आदि पुष्टि करते हैं कि कालिंदी के अंश हैं कालिंदी हैं श्री जीव गोस्वामी श्री हरिवंश में भी इस कथन के द्वारा प्रमाण देते हैं अर्थात यमुना देवी समुद्र की पत्नी है इसलिए हरिवंश में उन्हें सागरांगना भी कहा गया है Thank you so much. Yes. Yeah. Yes. Yes. Thank you for that very nice explanation and very good points. In the whole class, we were explaining all the fundamental structures. Example of Yudhishthira. So one of the versions what I heard about Mahabharata was that Yudhishthira himself had to direct in the gamble. And the reason what they give is even the fire which is there has some smoke with it. So even the great personalities have some faults associated with them. So this one is still right, and what else you have to do? Both could be right. Though they are the eternal servants of Lord, they are playing the role of Kshatriyas. So Krishna also would have created such desire in Yudhishthira also to play, so that all the villains will come to one place and they get killed in Mahabharata war. उनका प्रश्न था कि एक अपन ये भी सुना है कि जो युधिष्ठिर महाराज है उनकी जो जुआ खेलने की इच्छा हुई यह उनका दोष था और जैसे अग्नि के साथ धुआं होता है तो हर व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ उसके अनुभूति होते हैं तो उनमें उसे कौन सा कथन कौन सही समझ सकते जो आपने बताया ये है ना प्रभु जी ने इसका उत्तर दिया कि ये भगवान के नित्य सेवक हैं और भगवान ने इनके अंदर हो सकता इच्छा उत्पन्न की हो ताकि सारे असुर इकट्ठे हों और उनका विनाश हो जाए इसको दोनों तरीके से समझाना सकता है Bhagavatam says, Teji yasam na doshaya. In the great people, there are no faults. भागवतम कहती है कि ये सामने दोष आया जो महान लोग होते हैं उनके अंदर कोई दोष नहीं होता So we can blame the code of conduct. तो जो क्षत्रिय धर्म है उसकी आलोचना कर सकते हैं Thank you so much for giving me this opportunity. And we had a 10 days association in Govardhan Eco Village during our GBC college with His Grace Vaikunta Vaj Prabhu, His Grace Sundar Krishna Prabhu, His Grace Vishnu Swarup Prabhu, and again meeting all of you here and seeing your beautiful temple that is coming up here. I'm very, very happy and thank you so much. And one thing I would say that I visited many temples, but I would rank your temple number 1 in hospitality. There is Alok Ishwar Prabhu was taking care of every small thing, like ever since, even before we reached here. Yeah. Thank you so much. Hare Krishna. Jaya. Huh?